हम बाहर की दुनिया में कॉलेज में कर रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी में लेट एंड पे जाके उनको मिलती है मौके, तो छोटी छोटी ट्रेनिंग और स्किल्स में हमारे यहाँ, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने इंक्यूबेशन सेंटर्स इन पैरों पे खड़े करने और ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहाँ पे ये आपने स्टार्टअप्स और R&D और उनको लेके जाना है, तो यू नीड टू प्रिपेयर स्किलफुल वर्कफोर्स राइट इन द बिगिनिंग। तो ये इस पे काफी हो चुकी है। अब यूनिवर्सिटियां कहाँ खड़ी हैं, आप गैप्स आइडेंटिफाई कर सके कि भाई ये वो एरियाज हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज नीड्स टू वर्क, कीपिंग इन व्यू कि हमारे अपने इनहेरेंट प्रॉब्लम्स भी हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ओवरहॉलिंग के अंदर, बट व्हाट आर द शॉर्ट टर्म स्टेप्स एंड व्हाट आर द लॉन्ग टर्म स्टेप्स। So that would be very useful for universities to basically and develop that kind of ecosystem in their campuses, कि वो साथ साथ स्टेप्स को भी एड्रेस करें, साथ साथ जो चीजें हमारी अप्लाइड है, इकोनॉमिक इकोनॉमी इंजन है, इसको भी लाना जरूरी है। कितना बेसिक साइंस होनी है, कितनी अप्लाइड होनी है, तो इन एरियाज को अगर टच करें तो ये पॉलिसी के अंदर भी काफी हमें थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस, उसके अंदर ना। तो आप बाकी जानते हैं, आप इतने सारे यूनिवर्सिटी से एक्ट भी कर रहे हैं, इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, इन जरूर को हाईलाइट कीजिए और हमें भी बताइए एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज और नई यूनिवर्सिटीज, इसका भी जरा फर्क देखिएगा, वो किस तरह उनके और कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ बेहतरी हो सकती है, नई यूनिवर्सिटियां कहाँ कैसे ग्रो कर सकती हैं, उनकी डायरेक्शन में क्या थोड़ा सा फोकस हो जाए, तो ये छोटी छोटी चीजें जरा अच्छा हो जाएगा, जिससे प्रैक्टिकल स्टेप्स हो जाए। ये हमारा उसमें ये मेन एजेंडा है। तो अगर आप सारे वीसीस को, नमान साहब सबको कह दें, ये हम उनको एक दफा रिमाइंडर भेज देते हैं, बाकी सब आ गए हमारे साथ, और इसकी मेरी इको भी बहुत आती है, मैं मुझे कट कर दीजिएगा। तो आप सर, तो हम इसको इंट्रोडक्शन के बाद ना, इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपके हवाले कर देंगे प्लेटफॉर्म फॉर 30-40 मिनट्स एंड देन देयर बी इंटरैक्टिव सेशन। डॉक्टर साहब आप बताइए जब हम शुरू करना चाहें। अभी है सर 4 मिनट्स, अभी है 3-4 मिनट्स है, तो मैं मैसेज फिर से सर्कुलेट भी करवा देता हूँ। तो वो जो प्रेजेंटेशन है, इको थोड़ी सी है, मैं अभी भी आवाज जा रही है उनको, देख मुझे भी आ रही है, मैं पूरा माइक भी ऑफ किया है, आप बोलो। यहाँ प्रॉब्लम सर ये मुझे बताइए कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो आप लोग अपलोड करेंगे या मैं खुद करूंगा यहाँ से? परवेज साहब ये आपने खुद अपलोड करनी है सर, आपके पास क्योंकि खुद ही कंट्रोल रहे तो वो बेहतर है सर, एज कम्पेयर टू हमारे पास रहे। आप शेयर कर दें और उसको देख लें ना, ताकि फिर आप अपनी मर्जी से रन करते रहिए बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रही है प्रेजेंटेशन अभी? नहीं सर, अभी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई सर। एक सेकंड, लेट मी सी इफ आई कैन स्क्रीन शेयर दिस। अभी कुछ फर्क पड़ा है? नहीं सर, अभी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई सर। सर अभी? जी सर, अब स्क्रीन शेयर हो रही है सर। जी सर, अब हो गई है सर स्क्रीन शेयर आपकी। ठीक है। दोस्तों आप कंफर्म करेंगे अभी स्क्रीन शेयर हो रही है?
की नजर आ रही है स्क्रीन? हाँ बिल्कुल आ गई। ओके सर स्क्रीन एंड जी सर फुल सर आप फुल स्क्रीन कर देंगे। फुल कर दीजिए, डिस्प्ले पूरा हो जाए आपका। मेरा कैमरा भी ऑन है, नजर आ रहा हूँ मैं भी कि सिर्फ स्क्रीन नजर आ रही है? You are fine, we can see you. ओके कूल एक्सीलेंट। Bismillahirrahmanirrahim. Today's session, the first session, our speaker is very esteemed guest Parvez Abbasi Sahab. He's a technology entrepreneur serving as a project director of National Incubation Center, Pakistan. So Abbasi Sahab has dedicated his life supporting our, this the passion of basically inculcating entrepreneurship in youth. So his journey started from a small school tuck shop at the age of 13 to $1 billion revenue company. So there'll be a slight introduction after this, and then we'll hand over this session to Parvez Abbasi Saab. Ji. Parvez Abbasi. He is a tech entrepreneur currently serving as the project director of the National Incubation Center Pakistan, a public-private partnership between the Ministry of IT and Telecom, JAS and Team Up. The National Incubation Center is a globally recognized award-winning facility that started operations in 2016 from Islamabad and has expanded across Pakistan, creating jobs, 50 billion rupees of revenues and investment from over 1,000 startups. Parvez has diversified experience stretching across Europe, the Middle East, and Asia from startup and greenfield to established market leaders. His entrepreneurial journey started from a small school tuck shop at the age of 13 to a $1 billion revenue company called Mobile Zone. Mobile Zone became the largest mobile phone handset distributor in Pakistan. Currently, he is also working very closely with the Pakistan diaspora across Middle East, Europe, and the USA to provide mentorship, domain expertise, and funding to Pakistan startup founders across a variety of fourth industrial revolution technologies. Parvez has dedicated his life to supporting our Pakistan youth to develop the best version of themselves so that they can help build a strong country through economic growth and social impact to help people improve the quality. जी सर परवेज साहब आप अपनी स्लाइड सर शेयर करके अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. And first of all, it's an honor and a privilege. Thank you very much. A special thanks to Dr. Habib Bukhari Sahab, VC, Kohsar University. नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के हवाले से थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ कि 2016 में हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक आइडिया दिया था, और वो आइडिया बड़ा सिंपल था कि कोई भी हुकूमत इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती, और हमने ये आइडिया दिया था कि लोग यंग लोगों को entrepreneurs बनाएं so that they don't look for jobs but they become job creators. Alhamdulillah, it was a very successful program, and multiple awards, both domestic and international, received हुए incubation program को, and subsequently it was expanded to other cities including Karachi, Lahore, Quetta, Peshawar, now mashallah in Hyderabad and Faisalabad by the end of this month. Islamabad was the first incubation center. It was an experiment as a public-private partnership from the Ministry of IT and Mobile Jazz, who are our partners.
आज का जो topic है, over the last 5 or 6 years, we've worked very closely with industry, with university, with academia, as well as with the government. And today's discussion is around how we can look at fostering entrepreneurship and startup ecosystem, leveraging our academia and in particular the universities. This is not a new concept. Whenever we built the National Incubation Center, we looked at international best practices, looking at the US in particular, Europe, the Far East, and trying to localize it as much as we can. So with your permission, sir, I'd like to start this presentation. Why does Pakistan need entrepreneurship? And as I mentioned, touching that we have well over 100 million young people. सर आप सॉरी सर आपको इंटरप्ट करूं, आपकी स्लाइड्स शेयर नहीं है सर, आप दोबारा से स्लाइड शेयर कर देंगे. I just moved to the next slide. एक्चुअली अपनी स्लाइड शो नहीं हो रहा सर आपका बिल्कुल भी. दोबारा से स्लाइड शेयर करेंगे सर. Somehow disappeared. So it will take time. It doesn't matter. So a couple of minutes. Okay. Let's try it. Any luck? Is it Yes, now sir. showing? Yes sir. So why does Pakistan need it? Of course, we have such a large young population, and those people not be able to get jobs. And even if they are be able to get jobs, who are going to be those jobs creators? So this was the main purpose and reason. Of course, in addition to creating jobs, there's an advancement in technology, improvement of quality of people's lives. There are many, many challenges across various sectors in Pakistan. चाहे वो agriculture sector हो, चाहे वो health sector हो, चाहे वो education sector हो, and we believe that entrepreneurship would be able to fill many of those gaps and those challenges that Pakistan is facing. In terms of what we feel is the success of entrepreneurs, we call an entrepreneurial mindset. And I would like to make a point here that a entrepreneurial mindset does not necessarily have anything to do with education. Of course, education will support, supplement, and grow. But we have seen across the world, and especially in Pakistan, various communities who have perhaps not much education, but they have an entrepreneurial mindset. And if I refer in particular to the Memon community of Karachi, to the Chinyoti Baradri, as well as the Sheikh Baradri, typically who are very good as from an entrepreneurial perspective. So in short, it's a way of thinking and how to identify problems and then take those problems as opportunities and create solutions around those problems, ultimately allowing people to have a positive impact of the solution, but also to commercialize it and make money as well. So in short, it begins with the mindset, and I believe it ends with the mindset. You may be familiar with the triple helix model. I think this is a fantastic model, and Pakistan should not only work on this, but should work on this more seriously. According to our research, the triple helix model, especially in the US, has been very, very successful, where you have the government, you have universities, and of course you have the business corporations coming together, solving those different type of challenges and different types of problems, being supported by the government, and also of course using academia and students. And if we look at what is the benefit for all of these different partners, of course ultimately the support from the government results in the return through creation of jobs, creation of wealth, creation of taxes. At the National Incubation Center, I'm happy to share with you that we've managed to raise more than 50 billion rupees in sales and revenues and create over 120,000 jobs. And many of those jobs, of course, are taxpayers. So the government investment has actually been repaid. For every dollar that the government of Pakistan invested in the National Incubation Center program, $50 has been invested by the private sector. So it's 1 to 50. Similarly, I believe that there is a benefit to the universities that they would be able to get different types of support, not only from the government and from corporations, but also to help fund some of their research, which ultimately would translate into some sort of a solution or a business or a sustainable product or service. And that would allow them to then use that money not only to do the research, but also to hire students, PhDs and master's students for that particular research as well. And of course, the end result is that the corporations would benefit with that technology
by creating new products and services which they can launch into the market, and obviously, increase their sales revenues, and ultimately paying more taxes. So it's a kind of a positive circle, but it cannot be done, I believe, without all three of the stakeholders. All three of the stakeholders having mutual respect and being on the same level playing field. There, of course, have been studies on this particular subject, and here there is an example of this. I would encourage all of people who are interested to simply do a Google research or Google search on triple helix, and there will be many documents around that subject matter. And if required, I'm happy to share with you some of the findings that we've had, if you kindly just let me know. Of course, one of the most classic examples is Tel Aviv, and Israel is known as the startup nation, only second to Silicon Valley. Silicon Valley, just to remind everybody, started in 1952. So they have obviously, decades of experience. They have billions of dollars in support from their government, and they have some of the best minds from Stanford, MIT, Harvard, etc. But Tel Aviv, if you look at that, is a very interesting example. They have, when they started, had very few funds, very few resources, but over time they managed to use their national security, their government, and their universities to create some of the greatest products and services that everybody in the world is using today. Again, we have a couple of more examples which we can refer to in Australia. And in terms of what is the role that the universities can play, of course, there are two types of people. One is the researchers, the professors themselves, and of course the students. Both of these groups are specific, and they have addresses that they can need. They can add value to the product or service that is being researched into ultimately commercializing it. So for example, let's take an example of when COVID happened. There was a challenge. Many universities around the world, in collaboration with pharmaceutical companies, did the research to create what is now known as the COVID vaccine. You may be familiar with, of course, Oxford University and the role that they had to play in this. Resulting, incidentally, why in the case of Oxford, they were not concerned about making money, but there was a IP that was developed, which was worth billions of dollars through this process. The researchers, of course, they have a very deep understanding of the technology, and they have the skills to innovate and invent. What they need, we believe, is an understanding of how to commercialize their products. And this, by the way, is not just in Pakistan. According to the research and our understanding, even in the US, a typical university professor doesn't really understand how to commercialize their product, how to take it to market, how to do the business, how to speak to an investor and get the investor to raise money. And we believe that's an opportunity, and we're happy to collaborate on the National Incubation Center platform because we've developed a very large pool of such domain experts, of such pitching experts, and also a very large pool of both angel and venture fund investors who would be interested in looking at opportunities where they can make a sustainable commercial return. Students, on the other hand, of course, they bring a lot of energy, passion, time, and we call them half-baked skills and ideas that need improvement. And through this triple helix, they can actually help develop their own skill set. They can improve over time. And also they can facilitate the professors and the leaders to develop or do the groundwork or do the research or do the running around that is required. What they need, again, is a sense of how to run a business and understanding of what problems to solve. And in this particular case, at the National Incubation Center, we do actually take problems from industry and help to create solutions around that. And I can share with you a couple of examples of those. What we recommend is to basically incorporate mandatory entrepreneurial courses within the education system, not only at the university, but also at college, school, and maybe even primary level, to develop what I mentioned earlier is the entrepreneurial mindset, and curate programs that align students with the market. So this is something that cannot, again, be done in isolation, either by the government or by industry. However, can be done, I believe, in collaboration with industry and with the academia, the universities in particular. I also understand that, many people have discussed over the many years about industry academia linkages,
and for all practical purposes, they don't really exist. However, coming from the corporate business world, having a very close association with multiple universities across Pakistan, I do genuinely believe that there is a way forward, and neutral ground such as the National Incubation Center provides that facility where all people, be it from the government, be it from the corporate world, be it from academia, feel relatively comfortable in that environment. And therefore, once they have that level of comfort, I believe that those discussions, those conversations can start to happen, resulting ultimately in some sort of a change. I'd also like to suggest that, how we can help the universities. We have had a lot of learning over the last 5 or 6 years in terms of what works, what doesn't work, what are the best international practices, how do we customize them or localize them to our particular market and our particular challenges. I think we can do a lot of that in collaboration with the universities. Training for faculty and how to manage ORIC incubation centers. This is really a big pain area for me personally. And again, I believe that universities are trying their level best in good faith to develop the ORIC. However, if we look at over the last 3 years in particular, what we have invested in the ORIC program and what has come out of that ORIC program, I think there is a lot of improvement that is required. I'm sure there are learnings there as well, but we need to find a way to improve that particular space. And of course, what we have also developed is a career launchpad for upskilling students. What we found is that according to industry, up to 90% of students are unemployable. So there is a skill gap between graduation and employment. What we do is basically we sit in the middle. We have a 3-month program. It's called the Career Launchpad program. I'm happy to share more details with you should you be interested, where we run those students through 3 months. And at the end, and during that 3 months, we give them domain expertise based on their particular area of interest, their area of study, or their area of professional growth. Be it marketing, be it finance, be it accounting, be it legal, be it software, etc., etc. In addition to that, we provide them with what we call the softer skills in terms of how to develop a CV, how to have a digital presence, how to do an interview, and so on and so forth. In addition to that, because of the fact that we are very well connected, both, as I said, with the academia as well as with the industry, many people reach out to us asking us for placement of our fellows because they understand that having that additional 3 months of grooming allows those particular students to become more employable, and less effort has to be put on those particular students or fellows to get them job ready and to get them employable and to get them to deliver results. Just a quick impact of the National Incubation Center. We've had more than 12 billion rupees investment committed and close to $7 billion in revenues. And as I mentioned, 120,000. In terms of the Career Launchpad, I'm happy to share with you that these are the different types of mentoring sessions, skill building workshops, networking events that we have. And I'm happy to share with you that currently we're running our 4th cohort, and we've had 100% job placement so far. It's been a very successful program, and to be honest with you, it's a very simple program. I would encourage all of you, if you believe that you need any help or support in getting your students to get jobs, especially after they graduate, this I believe would be a wonderful program. We're happy to try this out with you, experiment with you. I'm optimistic, inshallah, that you will get some good results. These are some of the actual programs that have happened. You may recognize some of these people are industry leaders. These are the people who are actually conducting either those interviews or they are conducting those sessions, training sessions, etc., etc. Some of our fellows have gone on to work for these particular companies. In addition, those particular companies send their HR teams to train our fellows. So during those trainings, there is an opportunity to network from those professionals. So in short, what happens is that a person who comes has the opportunity to meet, speak with a professional HR from a bank or a telco or an FMCG or another company, and that in turn allows them to build a relationship with that individual
So subsequently in the future, whenever there is a job opportunity, they are also, referred, remembered, and preferred as a potential candidate. It doesn't stop there. We believe in the entrepreneurial mindset starting at a very young age. And we have started with young children as young as 7 years old, where we run different boot camps after school. Typically, these are 3-day boot camps where we teach them the entrepreneurial mindset. At the end of the 3-day boot camp, we give them 500 rupees cash, and we ask them to make something, to buy raw material and make something within 48 hours. That could be, for example, sandwiches, cakes, pastries, paintings, games, whatever they want to make. And then they come back to the incubation center, where we have typically around 3,000 people visiting on a monthly basis, guests from various different backgrounds. And then we ask them to sell their products that they have built or made to the people here. And I'm happy to share with you that from a small investment of 500 rupees, the winner of this particular event managed to sell and generate 3,200 or 3,400 rupees of revenue. And that it's not about the money, of course, but the process that that child went through, or those particular children went through, I believe is a life-changing experience, and that would help them in their future lives, irrespective of whether they choose to become doctors or accountants or professors or lawyers. With the entrepreneurial mindset, we believe they will become better lawyers, better teachers, better accountants, and better doctors, etc. If you guys would like to know any more, please feel free to reach out to Dr. Bukhari. He has all of my contact details, and Dr. Please feel free to share them with anybody who's interested. I would like to also take this opportunity to invite all of our esteemed guests to visit us at the National Incubation Center here in H9 in Islamabad. We are just behind Namal University. Thank you very much. Thank you very much, Parvez Abbasi Saab. So we've heard a lot about entrepreneurial mindset. That's the key mantra for creating the job. So we have to become a job creator rather than a job seeker. So that's one of the major agenda where the incubation center is playing a critical role in terms of, and that statistics which we have quoted, the statistics and the numbers which we have quoted are the reflection of that. And I'm sure the universities now would love to interact with you, all the members sitting here. And if there are any questions from Parvez Abbasi Saab, please raise your hand and feel free to ask any question from Parvez Abbasi Saab. Ji, please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह आपने बहुत इंटरेक्टिव किस्म की टॉक दी जो कि हमारे पास यूनिवर्सिटी और एकेडेमिया के लिए बड़ी हेल्पफुल है। सर एक छोटा सा शायद मैं कंपोनेंट मिस कर गया हूँ। नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप करने के लिहाज से और यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग के लिहाज से कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आप इस पे अगर थोड़ी सी हमें गाइडलाइन दे दें। यानी अगर आप यूनिवर्सिटी ने कोई इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप करने हैं तो उसमें आपका जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है वो किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या कुछ स्टार्टअप्स के लिहाज से। तो हमारे लिए, क्योंकि हमने प्रोग्राम्स डेवलप किए हुए हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर, तो मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है कि उसको री इन्वेंट करने के लिए, तो उसको हम थोड़ा सा अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। और सेकेंडली हमारे पास इसी तरह पैरेलल में बट मेरे है Your voice is breaking, sir. Abbasi Saab. सर मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा जो करिकुलम है वो मैं समझता हूँ कि वो बेनिफिशियल हो सकता है यूनिवर्सिटी के लिए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फैकल्टी के इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग नॉट ओनली देयर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट but helping them understand what are the challenges faced by startup founders and how to address those. In addition to that, domain experts जो है, mashallah, we have a large domain pool of experts should you need or should you choose to adopt that. And lastly, मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे investors हैं, angel investors हैं, VC funds हैं, उनको हम साथ लेकर आ सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे आपका नॉर्मली साल में 1-2 मरतबा डेमो डे हो सकता है, जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स उन इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और जाहिर है अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट भी रेज कर सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू सो मच। जी सुल्तान साहब, सर अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आपका माइक ऑन है सर। जी मेरी आवाज आ रही है?
जी आ जी रही है सर। बात। जी परवेज साहब, थोड़ा सा ये हाईलाइट कर दीजिएगा कि ये कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आप समझते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज आर स्टिल मिसिंग टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो एजुकेशन के साथ साथ होनी चाहिए, थोड़ा सा अगर उसको हाईलाइट कर दें। सर मेरे ख्याल के मुताबिक जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है ना, अल्टीमेटली वो हमें सिखाता है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको हम सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाएं और उनको कमर्शलाइज करें। जो लास्ट कंपोनेंट है इन पर्टिकुलर, वहां पे मेरे ख्याल में एकेडमिया के अंदर थोड़ी सी लैकिंग है, क्योंकि उन्होंने शायद ये नहीं कहूंगा, ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मेजॉरिटी ने शायद इंडस्ट्री में काम नहीं किया या उन्होंने अपना कारोबार नहीं किया। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि इवन जो मेरे दोस्त हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जो मैं इनको तनख्वाहदार कहता हूं, वो भी अपना कारोबार नहीं कर सकते, बिकॉज उनका भी माइंडसेट जो है वो एक एम्प्लॉई माइंडसेट है। तो इट्स नॉट जस्ट टू द एकेडेमिया, for you to be a entrepreneur you need to have a certain mindset. That mindset means कि महीने मिसाल मैं आपको दूंगा, मैं सोचता हूं कि महीना जब खत्म होगा तो मैंने तनख्वाहें भी देनी है, मैंने बिजली का बिल भी देना है, मैंने किराया भी देना है, वगैरह वगैरह। सो ये माइंडसेट के साथ मैं देखता हूं कि ये मैं चीजें कैसे अचीव करूंगा। मुझे पास कुछ आमदनी होगी तो मैं वो खर्चे पूरे करूंगा, बिजली के बिल अदा करूंगा, किराया अदा करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि एक एम्प्लॉई है वो इन चीजों के बारे में नहीं सोचता, वो सोचता है कि मुझे महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी और मेरी तनख्वाह जो है, मैं इतना किराया देना है और इतने बच्चों की फीस देनी है और इतना मैंने खर्चे पे खर्च करना है। और नॉर्मली आपको पता है हमारे कल्चर में वो लोग जो है वो फिर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, स्पेशली 25 तारीख के बाद। और वो जब स्ट्रगल आप फोकस करेंगे इन चीजों पे, तो आपका माइंडसेट आपको मौका ही नहीं देता कुछ और चीजों को देखने के लिए। तो सॉरी, कैन आई कंटिन्यू? जी सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाँ, सर। तो कोई तो हमें सोल्यूशन, ये तो एक रियलिटी है वाकई कि जो एकेडेमिया में हैं, जो जिन्होंने इस तरह की स्किल्स इम्पार्ट करनी है, वो खुद एक्सपर्ट नहीं है, तो कोई तो हमें बीच में से रास्ता निकालना पड़ेगा ना। तो कोई ऐसा है कि पहले हम फैकल्टी के लिए कोई इस तरह की ट्रेनिंग सेशंस रखें, या कोई इस तरह का आपका कोई प्रोग्राम है? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मैं वही अर्ज करना चाह रहा था कि वो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर भी हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में भी जाके हम उनके साथ भी मिलके काम करते हैं। इसमें मैं ये जरूर ऐड भी करूंगा, मैं समझता हूँ कि जो स्पेशली जो आपके यंगर प्रोफेसर्स हैं, बिकॉज टाइम्स चेंज हो रहे हैं आजकल, जो वर्क फोर्स के अंदर हमारे पास 4 मुख्तलिफ जनरेशन हैं, यानी कि 60 साल की उम्र के लोग भी हैं और 20 साल की उम्र भी लोग काम कर रहे हैं। तो इनके दरमियान में 30 साल के भी हैं, 40 साल के भी हैं, 50 साल के भी हैं। और ये मजे की बात यह है कि हर इस बंदे की सोच अपने हिसाब से है। मेरी सोच, क्योंकि मेरी उम्र शायद 50-60 साल के करीब है, तो मेरी सोच और होगी। जो 20-25 साल की उम्र का बच्चा है उसकी वो सोच और होगी। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये जब तक हम एक पेज पे नहीं आते, आइडेंटिफाई करना कि ये मुख्तलिफ जनरेशंस के लिए मुख्तलिफ चीजों की जरूरत है। इसमें सर, टू आंसर योर क्वेश्चन मोर स्पेसिफिकली, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, मैं तो चाहूंगा कि आप तशरीफ लाएं, हमारे साथ एक सेशन करें। आप अगर मुमकिन हो हमें दावत दें, हम आके वहां पे भी, इनफैक्ट हबीब साहब के साथ मेरी कमिटमेंट है इंशाल्लाह कि हम कोसार यूनिवर्सिटी में भी आके अपनी राय, अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज शेयर करने की कोशिश करेंगे। मैं अगेन ये नहीं कहता कि हमारे पास 100% सारे जवाब हैं या हम बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमें आता है वो जरूर शेयर करेंगे। और इससे मुझे उम्मीद है कि अगर 100% फायदा ना हो तो 5-10% कम से कम एक डायरेक्शन में तो चले जाएंगे। एंड लास्टली ये है कि मैं समझता हूँ कि 20% जो है, आपके जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनको टारगेट देना चाहिए कि कम से कम 20% उन्होंने इंडस्ट्री में गुजारना हो, एज पार्ट ऑफ देयर monitoring, evaluation and their promotion. 20% should be spent in the industry. जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं परवेज अब्बासी साहब, we have started this work in our university as well. I've ensured that कि हमारे जो असातिज़ा हैं वो इंडस्ट्री के अंदर अपना वक्त ज़रूर गुजारें
और वी ऑल्सो इंश्योरिंग दैट कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बाकायदा प्लेसमेंट दी जाए इंटर्नशिप्स के हवाले से। और ये सारी चीज़ें हम साथ साथ करवा रहे हैं, इंशाल्लाह नई यूनिवर्सिटी है। और apart from that, we're also trying to see that how we can basically generate curiosity, critical thinking, creativity, co-creation। ये कल्चर बड़ा ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। करिकुलम के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एम्बेड होनी चाहिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसका जो एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम है इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। आई हैव सीन मैनी यूनिवर्सिटीज़, और उसके अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट है, कस्टम मेड बनाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ द फैकल्टी, हाउ बेसिकली they are acting as an engine of change in terms of inculcating these curiosity, critical thinking, or actually by showing them that experimentally hands-on experience करके दिखा के demonstrate करके ये skill सिखाई जाए। और उसका जो जिस तरह आपने 500 रुपए से 3,400 रुपए का जो एक बच्चों को रेवेन्यू जनरेट करके दिया, तो दिस इज वेयर वी स्टार्ट डूइंग एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। बच्चों के अंदर ट्रेनिंग के अंदर भी ये बड़ा ज़रूरी है। वी फील के जब बच्चों को आप एक रॉ मटेरियल से कुछ कंस्ट्रक्ट करना सिखाते हैं तो दैट्स एन अचीवमेंट फॉर देम बाय देमसेल्फ। तो ये वो स्टार्टिंग जो इकोसिस्टम है जिसमें हम प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस अब करें। तो ये हम समझते हैं कि एक तो हमारे यहाँ क्योंकि एक्सपोर्ट के बड़े बड़े गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटेशन चाहिए होती है, तो बड़ा एक्सपेंसिव जो हमारा इस वक्त इक्विपमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ दीज सप्लाई चेन्स एंड ऑल दैट, और वो जो किट्स हम बनाते हैं कमर्शियली आर वेरी एक्सपेंसिव, और लोअर लेवल पे वो अडॉप्ट ही नहीं की जा सकती है। मैम फिर जो हम पढ़ाया करते थे बाहर की यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज और अंडरग्रेड में, वो हम एमफिल में पढ़ाते हैं। तो वही जो हम शुरू में बात कर रहे थे उसकी वजह ये है कि ये कंस्ट्रेंट्स हैं। वे द फैकल्टी कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल बाय इनोवेटिंग, डेवलपिंग एंड शोइंग दो स्किल्स इन हाउस अपने जनरेट कीजिए ऐसे एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स और डिज़ाइन के आप इन चीज़ों से बेसिकली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी वर्कशॉप बनाएं, अपने छोटे छोटे सेटअप्स बनाएं, तो ये इंशाल्लाह इससे बेहतरी होगी एंड वी विल टेक योर हेल्प ऑन दैट एज वेल। तो आपसे इंशाल्लाह ये डेमो वाला हम करवाते भी हैं, 1 साल में 6 महीने में ये इंशाल्लाह रखवाएंगे। इस बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी इंगेज करते हैं हाउ टू बेसिकली demonstrate this practically in our universities to engaging students or communities और हमारे जो असातिज़ा हैं। तो ये इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मजीद काम करेंगे। आपकी वी हैव रिकॉर्डेड दैट टॉक एंड इंशाल्लाह विल शेयर विद द वाइस चांसलर फोरम whoever has missed that, so they'll be also a part of this and we'll have an interactive session during the conference. Thank you very much for sparing your time and inshallah we'll share your talk, and अगर कोई और information होगी, कोई सवाल होगा, we'll make sure कि हमारी टीम आप तक पहुंचाए हमारे ऑडियंस। Thank you so very much डॉक्टर अब्बासी साहब for having being with us today. So next session हमारा जो होगा वो हमारे वाइस चांसलर अतर महबूब साहब हैं 12:30 पे। तो we'll share the link as well to you as well. If you have time, please join us. Thank you very much अब्बासी साहब। बहुत Take बहुत care. शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर गिविंग मी। अस्सलाम वालेकुम।